Assalamu alaikum students. Today our topic in social studies subject of class 1 is lesson 617 in the sky. Okay, आसमान में स्काई में आपको क्या नज़र आता है, डे टाइम और नाइट टाइम. ठीक है, चलो आप डिस्कस करते हैं. एट नाइट द स्काई इज़ डार्क. रात को आसमान पे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है. ठीक है, ब्लैक, उसका कलर ब्लैक हो जाता है. When it is dark, जब अंधेरा होता है, you can see the star. तो आपको उस स्काई पे स्टार्स नज़र आते हैं. They are very far. वो बहुत ज़्यादा दूर हैं. Far away. Sometime you can see the moon. ठीक है, बाज़ औक़ात आपको उसमें मून भी नज़र आते हैं. ये स्टार्स जो होते हैं ये दिन को भी होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि स्टार्स नज़र नहीं आते. तो रात को बिल्कुल जब अंधेरा हो जाता है तो ये स्टार्स जो है वो नज़र आते हैं. ठीक है, और कभी कभार इसमें मून भी नज़र आता है. ओके, द स्काई एट नाइट. ये देखिए नाइट टाइम का जो लोकेशन दिखाया गया है, स्टार्स है, मून है, और बिल्कुल स्काई का कलर ब्लैक नज़र आता है, जबकि डे टाइम स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है. ठीक है, सूरज की रोशनी की वजह से ये हमें ब्लू नज़र आता है. ठीक है, और ये स्टार्स फिर हमें नज़र नहीं आते. वाइट क्लाउड्स होते हैं, एरोप्लेन नज़र आते हैं, बर्ड्स होते हैं, काइट्स होते हैं, हॉट एयर जो गैस बलून्स होते हैं वो भी होते हैं. ठीक है, इन द डे टाइम यू कैन सी द स्काई. दिन के वक्त आप आसमान को देख सकते हैं. इट लुक्स ब्लू. ये बिल्कुल नीले कलर का दिखाई देता है. यू कैन सी वाइट क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय. यू कैन सी वाइट क्लाउड्स, आपको सफ़ेद बादल भी तैरते हुए नज़र आते हैं. फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए नज़र आने का मतलब ये है कि ये हरकत करते हुए आपको नज़र आएंगे. द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे. दिन के वक्त जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सूरज बहुत ज़्यादा रोशन होता है. ठीक है, इट गिव्स लाइट. ये हमें रोशनी देता है. एंड वार्मथ और प्लैनेट अर्थ, और हमारी ज़मीन जो सैयारा है उसको गर्मी यानी हरारत भी देता है. समटाइम्स द स्काई इज़ क्लाउडी. बाज़ औक़ात आसमान जो है वो बादलों से भर जाता है. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट विल हर्ट योर आइज़. कभी भी सन को, सूरज को डायरेक्टली ना देखें. ठीक है, ये आपकी आंखों को ज़ख्मी कर देगा. ज़ख्मी का मतलब ये है कि आपकी आई साइट को वीक कर देगा, कमज़ोर बना देगा. बर्ड्स कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई. बर्ड्स, परिंदे जो हैं वो आसमान में ऊपर ऊंचाई पे उड़ सकते हैं. एरोप्लेन्स फ्लाई इवन हायर. और एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़ जो है वो सबसे ऊंचा उड़ते हैं. ठीक है, now move toward the question answer. Okay, lesson 17, oral drill question answer. What can you see in the sky at daytime? What can you see in the sky at daytime? आप लोग दिन के वक्त आसमान में क्या देख सकते हैं? We can see sun, clouds, birds and aeroplanes in the sky at daytime. We can see sun, clouds, birds and aeroplanes in the sky at daytime. We can see sun, clouds, birds and aeroplanes in the sky at daytime. Question number 2. What can you see in the sky at night time? What can you see in the sky at night time? We can see moon and star in the sky at night time. ठीक है, नाइट टाइम, रात के वक्त आप लोग आसमान में क्या देख सकते हैं? We can see moon and star in the sky at night time. We can see moon and star in the sky at night time.
Question number 3. Our national flag has something you can see at night on it. What is it? Our national flag has something you can see at night on it. हमारे जो कौमी झंडा है उस पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग रात को देख सकते हैं. What is it? वो क्या है? That are moon and star. Moon and star. Moon and star. Moon and star. Okay. Now repeat these again. What can you see in the sky at daytime? We can see sun, clouds, birds, and aeroplanes in the sky at daytime. We can see sun, clouds, birds, and aeroplanes in the sky at daytime. What can you see in the sky at night time? We can see moon and stars in the sky at night time. We can see moon and stars in the sky at night time. Question number 3. Our national flag has something you can see at night on it. What is it? That is moon and star. Moon and star. Moon and star. Okay, note on the homework. Learn question answer of lesson 17 and also do reading of this lesson on book. Learn question answer of lesson 17 and also do reading of this lesson on book. Thank you.